This is session 2 and I will cover question 4 to 6, and this question is about K-map, circuit designing, encoding and SDLC. Question number 2, fourth part is why is K-map considered better than direct Boolean simplification for larger expressions? Give 3 reasons. K-map is a visual simplification method that arranges truth table values in a systematic way. इसमें क्या किया जाता है, हम एक टेबल बनाते हैं, तो उस टेबल में हम उसको वैल्यूज देते हैं और वैल्यू लिखने के बाद हम जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम मैप कर देते हैं और फिर हम उसमें ग्रुपिंग करते हैं. It reduces algebraic mistakes. इससे क्या होता है कि जो algebraic mistakes होती हैं वो reduce हो जाती है and saves time when simplifying lengthy Boolean expressions. Third point is it forms group of adjacent ones to produce minimum expression which needs fewer gates and lower circuit cost. इससे क्या होता है कि हम अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब हम अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो जाहिर है कि उसमें लेस नंबर ऑफ गेट्स यूज होंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर उस एक्सप्रेशन का फिर हम सर्किट डिजाइन करते हैं. ठीक है, लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं और उसकी भी आउटपुट वही होती है जो आपके पास एक लेंथी एक्सप्रेशन की आउटपुट थी, सेम थी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा यूज हो रहे थे, इसमें नंबर ऑफ गेट्स कम यूज होते हैं. तो यही हमारा बेनिफिट होता है कि हम एक्सप्रेशंस को के मैप के थ्रू रिड्यूस करें, उसको सिंप्लीफाई करें ताकि हम लेस नंबर ऑफ गेट्स को यूज कर सकें. एग्जाम टिप, यूज विजुअल ग्रुपिंग, minimum expression and pure gate. Alternative question is differentiate between combinational and sequential circuit with one example of each. Combinational circuit output depends only on present inputs. Present inputs, it has no memory, for example, adder or multiplexer. Sequential circuit output depends on present inputs and past state. It uses memory, for example, flip-flop or counter. Sequential circuits use memory elements. Combinational circuits do not store previous state. Exam tip is main difference is memory and past state. Fifth part is a message is converted into binary before transmission. Explain the role of encoding and decoding in this process. Encoding converts the original message into a coded or binary form that can be handled by a computer or communication system. Binary data can be stored, processed, and transmitted efficiently because computers work internally with zeros and ones. Decoding converts received binary data back into an understandable message for the receiver, such as text, sound, or image. Flow is first message, then encoding, then binary, and then decoding. Fifth part alternative question is how are logic gates used in modern computing devices? Explain any 3 real-life applications. Logic gates perform arithmetic operations inside CPU circuits
such as addition using adder circuits. They are used in decision-making circuits such as control units, traffic lights, and alarm systems. They help build memory units, adders, multiplexers, and digital controllers, which are basic parts of digital devices. Example is connect gates with CPU, memory, and control circuits. Part 6 is a college wants to develop in online exam systems. Why is feasibility study necessary before development? Give 3 reasons. It checks technical feasibility, whether required hardware, software, network, and technical skills are available or not. It checks economic feasibility, whether the expected benefits justify the cost and available budget. सेकंड क्या चेक करेगा? वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को चेक करेगा, वो देखेगा क्या इस प्रोजेक्ट से, इस सॉफ्टवेयर से टीम को फायदा भी होगा या नहीं, या ये ना हो कि ये प्रोजेक्ट गेट तो कर ले लेकिन इस पे बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाए, ये प्रोलॉन्ग कर जाए, वो लंबा प्रोजेक्ट हो जाए. ठीक है, तो देन स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगी. तो इन चीजों को भी देखते हैं. इट चेक्स ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, और फिर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी देखते हैं जिसमें whether teachers, students and staff can operate the online exam system effectively. और फिर उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को भी चेक करेंगे कि क्या टीचर, स्टूडेंट्स या स्टाफ उसको इजीली उस सिस्टम को यूज कर सकेंगे या नहीं. एग्जाम टिप: राइट टेक्निकल, economic and operational feasibility. Alternate question is differentiate between requirement gathering and requirement validation with example. Requirement gathering means collecting user needs through interviews, questionnaires, survey or observations. Requirement validation means checking whether collected requirements are correct, complete, consistent and realistic. Example is asking teachers about online exam feature is gathering, confirming those features with the users is validation. Exam tip is gathering means collecting, validation means checking correctness.